All right, the top story at this hour, even as people in the National Capital Region find it difficult to breathe, the top court of the country has come down heavily on pollution in the National Capital and surrounding areas. The court has taken AAP government, in fact in Delhi and Punjab, head-on, questioning their lackadaisical approach to control pollution, letting people of Delhi NCR down. Top court of the country also issued a slew of directions to be implemented by 5 northern states responsible for causing pollution. It was a massive loss of face for the AAP government in Delhi, as the top court pointed out that their odd-even scheme for vehicles in Delhi was mere optics and that there was no use of it. Following this, Delhi Environment Minister held a meeting to discuss further course of action. Now, in another important observation, the top court said paddy cultivation must be phased out and substituted with other crops. सुप्रीम कोर्ट का ऑड इवन को लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशन हमने मीडिया में देखा है। उसके बाद अभी हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद एक बार हम उसको स्टडी करेंगे और जो सुझाव या जो ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आएगा उसको फिर इनकॉर्पोरेट करते हुए उसके अनुसार हम अपनी योजना को बनाएंगे। देखिए, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने ऑब्जर्वेशन दिए हैं उस ऑब्जर्वेशन के साथ उनका डिटेल ऑर्डर जो भी आता है हमारी सरकार उसको फॉलो करेगी, चाहे यहाँ पर हो या पंजाब में। और हमारा ये भी निवेदन है कि सभी सरकारें उसको फॉलो करें, क्योंकि सभी लोग मिल करके जब प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि पोल्यूशन का समाधान हम निकाल पाएंगे। दिल्ली पुलिस हो, एमसीडी हो, दिल्ली सरकार हो, हम सबका जॉइंट एफर्ट है। हम सबको मिलजुल के पोल्यूशन की लड़ाई को लड़ना है। और रही बात स्मोक टावर्स की, तो मुझे कल ही पता लगा एक शायद वर्किंग नहीं था और उसको ठीक कर दिया गया है और वो पूरी तरह से काम कर रहा है। तो एमसीडी भी अपना पूरा काम कर रही है, दिल्ली सरकार भी पूरा काम कर रही है और मैं दिल्ली पुलिस के भी गुजारिश करूंगी कि अपनी भी पूरी जिम्मेदारी समझते हुए पोल्यूशन की इस लड़ाई में हमारा साथ दें। अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने केवल दोषारोपण किया है, कभी केंद्र पर दोष, कभी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिवाली, सभी लोगों पर दोष डाला, अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और आज इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है, कहा है ये ब्लेम गेम बंद कीजिए, अपनी जिम्मेदारी उठाइए। आज दिल्ली वासियों की सेहत पर इतना बड़ा खतरा पैदा हुआ है, उसके लिए पूर्ण तरीके से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल है। परंतु अरविंद केजरीवाल सियासत और चुनावी कैंपेनिंग से बाज नहीं आएंगे, उनको दिल्ली की जनता की कोई परवाह नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पहले दिल्ली का तो पोल्यूशन खत्म कर दे, वो हरियाणा का तो पोल्यूशन खत्म कर दे। यार इतनी दूर दिल्ली कैसे पोल्यूशन चला गया? पहले जो केजरीवाल था वो हमें बदनाम करता रहा, जब उनकी गवर्नमेंट बढ़ गई पंजाब में पोल्यूशन खत्म। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये फर्ज बनता है कि पंजाब एक अन्नदाता स्टेट है। जब पूरे देश में अन्न नहीं था, अनाज नहीं था, पंजाब के किसानों ने, बहादुरों ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाई, वहां से इन्होंने पूरे देश को अनाज जो है वो पैदा करके दिया। आज उनके ऊपर यार आरोप लगा रहे हो। ये केंद्र सरकार की प्राइमरी दायित्व बनती है। जब भी कई सारे राज्य और ऐसे मुद्दे सामने आते हैं, केंद्र सरकार को बैठना चाहिए, उसमें केंद्र सरकार क्या सपोर्ट कर रही है, केंद्र सरकार ने अब तक क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन किए, क्या केंद्र सरकार सीरियस है दिल्ली के काम को रोक कर जो पॉल्यूशन से रिलेटेड है। और खट्टर सरकार जो है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर पराली को और बढ़ावा देकर जिस तरीके से ये उल्टा काम कर रही है, ये तो नैतिकता के खिलाफ है। My colleague Anu Sarda is getting us more details on that story. Joining us from Supreme Court, Amit Bhardwaj continues to be with us from the Aam Aadmi Party's headquarters in Delhi City. First of all, Kanu, the court has come down heavily, not just on the Aam Aadmi Party, but has also asked other states like the BJP-ruled states, importantly like UP, Haryana and Rajasthan, of course, is Congress-ruled, to do much more, to do more than what they're doing in terms of stopping stubble burning. The onus is on the state police. The onus is on the chief secretary of all of these states, is what the court has said.
Yes, Neha, all the chief secretaries of all the states have to convene a meeting urgently tomorrow without fail. This is the first direction which has come from the Supreme Court that the immediate steps needs to be taken, else the situation in the national capital is going to be worsened year after year. The blame game is already there between Delhi and Punjab. Uh, the, the top court has said that it needs to be stopped, and also came down heavily on the odd even scheme of the Delhi government, asking as to what is the analysis of the scheme which was implemented year after year. Has it come down? Has the scheme has effectively come down the pollution or not? This needs to be seen. So the Supreme Court has put out a lot of things and has now kept the hearing for November 10th, that is the Friday this week, to understand as to what immediate measures that can be taken. Also, remember the DPCC president, chairman is being asked to appear personally before the top court, and with all the data that what is the pollution level in the city and what measures the DPCC can immediately suggest to the Supreme Court, so that that can be included in the order and pass it on to all the states which are because of which the Delhi is affected. And the Supreme Court has also asked the Punjab government to stop the subsidy, stop the MSP which is given on the paddy at this point of time, and suggest an alternative crop that can be sowed in this. The Supreme Court has also expressed concern over the sowing of the paddy in Punjab, saying that the water level goes really down in the state, and the state has to act on that so that the paddy sowing can be stopped for now. All right, Kanu, be with us. It's just coming back to you in a moment from now. So Kanu is taking us to the details of what essentially has been said by the Supreme Court today, wrapping the governments in Delhi and Punjab, talking about the fact that it's the same government in both states. What are you doing?